Good morning, children. I'm going to start trigonometry today. And in trigonometry, I shall start associated angles. Angles. In class 10th, all of you must have read the value of all the trigonometrical ratios from 0 degree to 90 degree. I mean 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. But here, once you have entered in class 11th, we shall study beyond 90 degree. So how to get the values of these trigonometrical ratios from 90 to 360 or onwards, how to find? For that, let me have a way. Here the first quadrant, here the second quadrant, here the third one, and here the fourth one. This side is 0 to 360, 0 degree to 360 degree. 0 to 90 degree. Here 90 degree to 180 degree. Here 180 degree to 270 degree, and here 270 degree to 360 degree. If more than that you wanted, then again we can have, this is the one rotation, one cycle, then you can have the second cycle, then 360 plus, then we have the third one, then 720 degree plus. So that way we can find any angle from 0 to 360 degree and onward with the help of this one. For you, a little I will make you to understand, but not that much needed. Here, my dear, all are positive, all positive. All are positive. Look here, the base positive, the perpendicular positive, and hypotenuse is always positive. So you don't go to decide on the base of hypotenuse. But here, look here, sine theta, that is, yes, sine theta is, cos theta is, that is perpendicular upon hypotenuse. So this is perpendicular, this is side upon hypotenuse, of course, means all positive. Here sine positive, or wherever sine association is positive, like sine theta, cosec theta positive. In third quadrant, here tan theta and cot theta, and in fourth quadrant, then here cos theta and sec theta. That is all. Why you can say that, yes, why sir it is positive? Look here, if we have here sine theta, then sine theta, you know, perpendicular upon hypotenuse,
and perpendicular to this way will be positive, up, as in coordinate axis. So perpendicular will be positive and hypotenuse is positive. Cosec is hypotenuse upon perpendicular, perpendicular is positive and hypotenuse will be always positive. Now look here, tan theta and cot theta, perpendicular upon base, perpendicular upon base. So perpendicular here for this is perpendicular, yani sin theta upon cos theta are perpendicular upon base. So base is here, perpendicular is here, both negative, so tan theta positive. Cot theta again, that is, yes, base upon perpendicular. Here, then look here, cos theta, then cos theta is here, this is base, positive, x towards this side is positive and hypotenuse is positive, so here, and sec theta is the reverse of cos. So that's how it was decided that how we can find some in which quadrant which trigonometrical ratio will be giving the positive value. Then here all positive, sine or cosec positive, here tan or cot positive, here then cos theta and sec theta positive. Sometimes people like it to say A, S, T and here C. Just in short, for you to memorize it, people have made a signal like आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताए हैं जिससे याद होगा. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, here 180 degree, here 270 degree. So between 0 and 90 all trigonometrical ratios will be positive. So A, from 90 to 180 sine and its family, I mean cosec, will be giving positive. A, S, T gives tan positive or cot positive. So A, S, T and C here cos positive. Sometimes हम लोग जब छोटे थे तो ये बतलाते थे टीचर लोग, ऑल सिल्वर टी कप्स, all silver as T means TA, that here capital T and cups ka C, they will be giving you positive. So if I say you what would be the value of sine of 60, you know, because you have learnt in class 10th, that all the values are positive. What's the value of sine of 120? Sir, here this is 90 to 180, so sine of 120 is positive. What will be the value of cos 225? Sir, here tangent will be positive, but cos is other than tan or cot, others are negative, so cos 225 is negative. What will be the value of tan 330? You don't know exact value, that I will be telling you afterwards. But this much you are sure that here tan 330 is, yes, tan 330 is positive or negative? Negative, because cos or sec telling. So please, my dear children, you should be very much alert. If anybody says, what will be the sine 110 degrees? Sir, we don't know sine 110 degree, but you know that sine 110 degree is positive.
positive. What is the value that matters afterwards? So in second quadrant, except of sine and cosec, all are negative, sine and cosec positive. In third quadrant, except of tan and cot, all are negative, in tan positive and cot positive. In fourth quadrant, except of cos and sec, all are negative, and cos and sec are positive. So this is all. The second one, look here. One thing more you have to learn, that 90 is associated trigonometrical ratios, like 90 plus minus theta gives opposite ratio. To 70 degree plus minus theta, that also give opposite one. And then 180 plus minus theta or 360 degree plus minus theta, that gives same trigonometrical ratios. Same trigonometrical ratios. I should ask you, how are we getting? I am not going to make it explain, time taking, and that is not that important. So if I ask you, what is sin 90 minus theta? You can say it will be cos theta. मैं नहीं जानता हूं प्लस और माइनस, दैट वी शैल डिसाइड. अभी बोलो tan 90 plus theta cot theta, cot 90 minus theta tan theta, sec 90 minus theta cosec theta, cosec 90 minus theta sec theta, tan 90 plus theta cot 90 plus theta tan, opposite one, opposite ratio. अब वो प्लस होगा या माइनस, दैट वी शैल डिसाइड फ्रॉम हियर. If you say sin 90 minus theta, sir, all positive between 90 minus 90, below 90, all. So sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, sin theta, tan 90 minus theta, cot 90 minus theta, tan theta, sec 90 minus theta, cosec 90 minus theta, sec theta. 90 प्लस में भी अपोजिट देगा, लेकिन अब हम अलर्ट रहेंगे. अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 90 प्लस थीटा, साइन हमें पाना है, सो इट इज पॉजिटिव कॉस थीटा. कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस हियर निगेटिव, साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब निगेटिव. कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, sec 90 plus theta minus cosec theta, cosec 90 plus theta sec theta. अपोजिट मिलेगा लेकिन प्लस मिलेगा, क्योंकि cosec और sin के अलावा बाकी सब निगेटिव होगा. tan 90 plus theta minus cot theta, cot 90 plus theta minus tan. सेकेंड में हमेशा हम ध्यान रखेंगे साइन और कास के अलावा जो बोलूं आप अपोजिट बोलेंगे और माइनस बोलेंगे. लेकिन जब साइन और कॉसेक होगा तो अपोजिट तो बोलेंगे लेकिन सेम बोलेंगे. फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, देखूं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा. Now come to this third. सेम वाला रेशियो है 180 और 360 वाला. बस ये ध्यान रखना है, इसमें हमें आना पड़ेगा, इसमें हमें tan और cot के अलावा बाकी सब निगेटिव. साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा, यस, tan theta, cot 180 plus theta, cot theta, sin 180 plus theta, sin 180 plus theta, minus sin theta,
cos 180 plus theta minus cos theta, sec 180 plus theta sec theta but minus sine, cosec 180 plus theta cosec theta but minus sine, tan 180 plus theta, tan gives here positive, tan gives here positive. So tan 180 plus theta tan theta, cot 180 plus theta cot theta. Look here, sin 360 minus theta, sin 360 minus theta, cos और sec के अलावा बाकी सब निगेटिव, तो सेम तो देगा, 360 सेम देता है बट gives opposite sign. Sin 360 minus theta minus sin theta, cos 360 minus theta cos theta, sec 360 minus theta sec theta, cosec 360 minus theta minus cosec theta, tan 360 minus theta minus tan theta, cot 360 minus theta minus cot theta. अब मैं जरा सा एब्सर्ड वे में पूछ रहा हूं, sin 180 plus theta, sin 180 plus theta, sin 180 plus theta, that is minus sin theta, cos 180 plus theta is minus cos theta, sin 360 minus theta minus sin theta, cos 360 minus theta cos theta, sin 180 plus theta sin theta, tan 180 plus theta minus tan theta. जरा 270 को भी देख लो, साइन 270 प्लस थीटा, आई एम कमिंग टू द फोर्थ वन बेटा, फोर्थ, तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 90 अपोजिट देते हैं, लेकिन अब प्लस देंगे कि माइनस, जरा इसमें देखूं, इसमें साइन 270 प्लस थीटा दैट विल बी कॉस थीटा बिकॉज 270 है, माइनस है प्लस, सर माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि आप तो बताए हैं कि यहां से यहां तक साइन निगेटिव देगा, तो साइन 270 प्लस थीटा, यस, कॉस थीटा विथ माइनस साइन, कॉस 270 प्लस थीटा, 270 वाला अपोजिट देगा, साइन थीटा बट पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव का एरिया है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, 180 है सेम देगा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा cot थीटा, cos 180 प्लस थीटा सेम तो देगा लेकिन माइनस, क्योंकि ये एरिया tan और cot के अलावा, तो दिस वे वी कैन रिमेंबर इट एंड फाइंड ऑल द रिजल्ट्स. तो फिर अगर हमें कोई भी एंगल पूछेंगे, एक तो वो पूछा जाएगा जो वही, या आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे वही जो 30, 45, 60 डिग्री से एसोसिएटेड हो, इससे ज़्यादा नहीं. तो आइए कुछ क्वेश्चंस करता हूं मैं. फर्स्ट आई विल बी डूइंग, बट शैल यू रिमेंबर इट? आई जस्ट रब इट नाउ. आई विल गिव यू रेफरेंस. Say it is asked, sine of 225 degree, tan of 315 degree, cos of 120 degree, cosec of 120 degree, cos of 300 डिग्री. कह रहे इनकी वैल्यूज बताइए. हमें नहीं पता है, हमें तो पता है ओनली 30 to 90 के बारे में, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करके पता लगाएंगे. देखो तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री.
कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा? दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा बाकी सब नेगेटिव होता है। सो आई एम गेटिंग, और 180 विल गिव द सेम रेशियो, तो वो तो चिंता नहीं है, केवल प्लस या माइनस लिखूं, ये देखूं। आई एम कमिंग 180, दिस विल बी गिविंग sin 45 डिग्री। अब मैं सोच रहा हूं कि प्लस बोलूं कि माइनस बोलूं, कहां से जाऊंगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा बाकी सब निगेटिव देते हैं, सो माइनस। जरा यहां पर देखो, दिस इज, हाँ दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 270 से 360, देन tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये 360 है, 360 इज वेरी फ्रेंडली टू यू। आप ये कम से कम 180 360 से एसोसिएट करेंगे तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिलेगा, इसलिए मैंने इसको किया। तो tan 45 डिग्री, बट आई एम to be very sure whether it will be minus or plus in fourth quadrant, cos और sec के अलावा बाकी सब नेगेटिव, so negative। cos 120 then cos of 180 degree minus 60 degree, this is the second quadrant। और 180 है तो कम से कम एक बारे में तो हम खुशी हैं कि this will be cos 60। But whether it is minus or plus, second quadrant A S T C, S वहां पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। S या साइन या उसका एक उसी के फैमिली का है कॉसेक, इसलिए इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब, तो कहूंगा कि ये तो कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो माइनस। चलिए कॉसेक 120, कॉसेक 120 180 माइनस 60, ये तो पक्का पता है कि आप बोलने जाएंगे कॉसेक 60 डिग्री। बट वेदर इट इज माइनस और प्लस, इट इज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सो पॉजिटिव, नॉट नीडेड टू बी रिटन। cos 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 360 माइनस 60, सो 360 के कारण cos 60 लिख रहा हूं। अभी श्योर करना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। या हाँ, द नेक्स्ट सेट क्या है? हाँ, ये सब उसी में है क्या? ये 11, हाँ 20, ठीक है। नेक्स्ट, ओ हो कितने, हाँ एक मिनट, हाँ। नाउ कम टू 27, वेरी सिंपल, सो आई एम लिविंग प्रेजेंटली दैट वैल्यू। लुक हियर, वो देगा कैसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। 28 आई एम डूइंग। So simple questions, so actually it should be given to the students, and after they are not able to solve, then only teachers should solve. Very simple, very simple. Don't say that sir आपके लिए तो सब simple होगा। No, not that way. I am taking it that really very simple, क्योंकि एक बार आप जान गए कि 180 और 360 के साथ वो सेम रेशियो देगा, और 90 270 के साथ अपोजिट रेशियो देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव, एंड फोर्थ में सेकंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो इस हिसाब से मैं जरा सा देखूं। 28 अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, देख रहा हूं क्या कर रहा है। ABCD द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हियर साइक्लिक मीन्स दैट इज इन सर्कल, and here is the quadrilateral is there, A, B, C and D.
ABCD are the angles of a cyclic quadrilateral. Then it speaks that show that cos A plus cos B plus cos C plus cos D equal to 0. Cos A plus cos B plus cos C plus cos D equal to 0. We can write, you know that in cyclic quadrilateral the opposite angles का सम होता है 180 डिग्री. Sum of in cyclic quadrilateral. Cyclic means the circle is surrounding it. Quadrilateral. A plus C equal to B plus D equal to 180 degree. Sum of the opposite angles in cyclic quadrilaterals being 180 degree. So I can say, look here cos A left hand side, cos A equal to cos 180 minus C. And cos B equal to cos 180 degree minus D. You know cos 180 minus theta same देगा, same ratio. So it is cos C plus or minus 180 minus second quadrant, so minus cos B 180 minus D, of course minus cos D. Cos D I am telling, but here it is in second quadrant, so minus. So left hand side being cos, left hand side में cos A equal to minus cos C minus cos D plus cos C. Oh, simple, so simple, and that is equal to 0. Means I am not finding actually the questions here. 30 looking a good question. 30 is looking a good question. And then it speaks the first question. Let me see. Uses कितने अच्छे आ रहे हैं? नहीं, the same. अच्छा, yes, 30th question. So off it. Look here, the question 30th. Dear boys and girls, I will not do all the 30th question, all the 30 questions. First, I give you the time, and after 2 days, I'll be again join this associated angles. But before that, I would like that you should be solving all the questions and finding, because all the questions based on this 180 plus minus theta, 90 plus minus theta, 360 plus minus theta, or n into 360 plus minus theta. That is all. Here sine n into, n means number of rotations, n into 360 degree plus minus theta, plus theta only, that is equal to sine theta. For all trigonometrical ratios, here cosec n into 360 degree plus theta, and that is equal to cosec theta. So with this, let me do one question. First I will explain you, then I will be doing on the board. Tan 1 degree. Here it is in the last, tan 89 degree. Before 89, what would have been here? Tan 88 degree.
ऐसे करके डैश डैश मतलब यहां से फ्रॉम tan 1 डिग्री टू tan 189 डिग्री, सॉरी, then tan 89 degree I can write tan 90 minus 1, tan 90 minus 1, that is cot 1. So that tan 1 and cot 1 could have been cancelled, and that is 1. So let me do here the question. Tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, tan 87 degree, tan 88 degree, tan 89 degree, and that to be proved as 1. I take one from beginning and one from end. Tan, I am taking it the last. Tan 89 degree, that is tan 90 degree minus 1, that is cot 1 degree. Further tan 88 लिखा नहीं है, बट आई नो कि उसके पीछे यही होगा. tan 88 degree, tan 90 degree minus 2 degree, that is cot 2 degree, tan 87 degree. For you I have written some of the results more. Tan 90 minus, yes, 3 degree, and that is equal to cot 3 degree. So what shall I do? I shall substitute all. Look here, tan 1 degree into cot 1 degree equal to 1. Similarly, tan somewhere I have to do here, then here, tan 2 degree into cot 2 degree, that is also 1. Tan 3 degree here into, from there the third one, that will be cot 3 degree, and that is also 1. So that way all the trigonometrical ratios from beginning and end at equal distances will be 1, and so it is. So this way I can write, or you can understand it, all the values of the trigonometrical ratios tangent and cot equidistant from beginning and end, that product will be 1, and hence 1. And let me go to the next chapter, next exercise. Sin A plus B, sin A plus compound angles, sin A plus B, cos A plus B, compound means here it is, देखना, sin A plus B into cos A plus B, sin A is here given, cos B is given here. I can find, and A and B are below, from greater than 0, less than pi by 2. So I am writing here one question. I am doing so simple that I cannot do, to my standard I should not do all such simple question, but I shall again pick up some of the questions in the next turn, just for your satisfaction I am doing here. Look here, A, B, I am doing it here only. What is there? Sin A equal to 4 upon 5, then cos A equal to 3 upon 5. You know, should I make this help also? Sin A, हो सकता है आपको ये अच्छा लगता हो, या वैसे करें. A is here, sin A, that is 3 upon 5, then cos A equal to, this will be 4
then cos A is equal to 4 upon 5. Y plus only, here it is given that sin A is 4 by 5, 3 by 4, 3 by 5 ठीक तो है. हाँ, एक मिनट देख लूँ. Sin A is 4 by 5, sorry. Here it is 4 by 5 and here then it is 3, then cos A equal to 3 by 5. But here by this formula cos theta equal to under root 1 minus sin square theta and then plus minus 3 upon 5. But I shall not accept minus. Why? Because 0 to pi by 2 all are positive, so it is 3 positive in first quadrant. Cos B similarly here, and then it is given sin B is here also, and then sin A plus B. I have not told you, I should have told you, but ये थोड़ा सा इनका भी ऑर्डर जम नहीं रहा है मुझको. ठीक है, sin A plus B का ये फॉर्मूला होता है बेटा, sin A cos B plus cos A sin B. They have put it and found the result. Next. I'll come to again next day. Next, please go next. Sin B similarly, yes, right. ठीक है. I'll come to that. Based on sin A plus minus B, cos A plus minus B, tan A plus minus B, tan A.